Hey everyone, I am Shailja and welcome back to my channel हर हैप्पी वाइफ, जहां हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल से रिलेटेड एवरी मंडे एंड थर्सडे। और आज ना मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ एक स्किन केयर वीडियो बिकॉज इट्स बीन रियली लॉन्ग। मैंने आप सबके साथ कोई भी स्किन केयर वीडियो शेयर नहीं किया था, सो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए बिकॉज आज वाला स्किन केयर वीडियो इज गोइंग टू बी थोड़ा हटके बिकॉज इट हैज़ गॉट लॉट ऑफ डिटेल्स एंड टेक्निक्स एंड आई एम वेरी श्योर आज के वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन विद द वीडियो। बट उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हाय, वेलकम। मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, बेल आइकन प्रेस कर दिया है एंड यस टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। नाउ लेट्स बिगिन। तो आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ दो मैजिकल फेस मसाजिंग टूल्स के बारे में दैट टुक द एंटायर ब्यूटी इंडस्ट्री एंड द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बाय स्टॉर्म, एंड दैट्स नन अदर देन The Jade Roller and the Gua Sha. So आपने काफ़ी सारे beauty influencers को देखा होगा talking about these two, and I too decided to get it for myself. So I recently invested in these two. But what's the truth? क्या actually ये tools amazing हैं? इनमें से कौन सा tool आपके लिए सही है? And इन tools को कैसे use करना है? Well, I am here to let you in on everything. I could wait 1,000 days. You never wait for me. You never wait for me. Even when I ran away, you're all that I could see. So सबसे पहले समझ लेते हैं what is Jade Roller or Gua Sha. So these are the massage tools that are made up of jade or quartz, either with the rotating stone rollers or just a contour piece of stone. इन दोनों ही टूल्स में से आप कोई सा भी रेगुलरली यूज करते हो, इट एक्चुअली हेल्प्स इन बूस्टिंग द ब्लड सर्कुलेशन ऑन योर फेस एंड इट फ्लशेस आउट ऑल द impurities by draining them from your lymph node. These also helps in releasing the muscle tension that builds up on your face every day. Now in long run, these tools helps in reducing the wrinkles, fine lines and all the signs of aging, and in short term it helps in depuffing your face and आपके सारे skin care products को ना deeply sink करने में help करता है, and overall I have to admit it feels absolutely great using them. 1,000 days, you never wait for me. Now, if you're confused that which of these tools will be right for you, then this video will surely help you make your decision. So इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा. Now, jade rollers are easy to use and requires less time. So if you are someone जिसके पास extensive skincare routine follow करने का time नहीं है, then this one is perfect for you. Gua Sha, on the other hand, is an ancient Chinese skincare practice that is seen more as a ritual where the technique is important. Now, it is definitely time consuming, but it gives the deeper skincare benefits in long run as you have more control over the pressure. Also, the shape of Gua Sha helps, sculpt and contour your face in long run. जब भी आप इन टूल्स को यूज करने वाले हो फॉर मसाजिंग योर फेस, मेक श्योर आपके ये टूल्स बिल्कुल क्लीन हो. नाउ यू कैन क्लीन दीज टूल विद सम वार्म सोपी वाटर एंड वाइप इट ड्राई. नाउ द सेकेंड स्टेप इज prepping your face. So make sure मसाज से पहले आपका फेस बिल्कुल क्लीन हो and then apply any moisturizer, serum or facial oils. Now these will help the massage tools glide on smoothly and it will also result in better product absorption. Using these tools on dry skin can burst the capillaries, so make sure you prep your face in the right way. Now these tools are naturally cold, but I like to store my massaging tools into the refrigerator before using them for the extra cooling and relaxation. Remember, इन टूल्स को यूज करते वक्त आपको अपने फेस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है. Be very gentle with it and always move the stone in one direction and not back and forth. Now, if you're using a roller, start at your neck and move upward and along your jawline toward your ear. Then outward from your lip, working your way up the cheek, following the natural shape of your cheekbone. Now, if you have a roller with two sizes, you can switch to the smaller end and you can roll along the sides of your nose to your under eye area and out towards your temples and then under your brows. Finally, go from the middle of your forehead outward and upward on both sides. Now, if you have Gua Sha, use the gentle curve edge to scrap your neck. Use the indent to shape your jawline towards the ears and the straight edge
to work up from the sides of your mouths towards your cheeks and upwards. Apply the rounded corner on your under eye and brow bone and finish up by using the indent on your nose and the flat edge on your forehead. Now इन सारे प्रोसेस को करने में आपको मिनिमम 2 से 3 मिनट का टाइम लगता है एंड अगर आपके पास टाइम है तो आप इस प्रोसेस को 5 से 10 मिनट तक भी कर सकते हैं। ना एक बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन आता है कि हम कौन सा स्टोन यूज करें, जेड या फिर क्वार्ट्ज। वेल आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, मार्केट में जेड और क्वार्ट्ज के अलावा भी स्टोन्स अवेलेबल हैं जैसे कि एमेथिस्ट एंड ऑब्सिडियन, बट इन सारे स्टोन्स में से जेड एंड क्वार्ट्ज सबसे ज्यादा कॉमन स्टोन्स हैं। ना जेड एंड क्वार्ट्ज का जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि जेड थोड़ा सॉफ्ट स्टोन माना गया है एंड ये जल्दी खराब हो जाता है, इट इज मोर प्रोन टू वेयर एंड टेयर, वेयर एज क्वार्ट्ज जो होता है वो थोड़ा हार्ड स्टोन होता है, ये लंबे समय तक टिकता है। एंड एक और चीज है जो क्वार्ट्ज को थोड़ा अलग करता है वो ये है कि इसमें कोल्ड रिटेन करने की कैपेसिटी थोड़ी लंबी होती है, इसीलिए समटाइम्स या फिर मैक्सिमम टाइम्स क्वार्ट्ज स्टोन जो होता है वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है इन कंपैरिजन टू जेड। Like anything else, these stone also takes time to show the results, so be patient and use them regularly. Now, before you are investing in one of these magic tools, it is very important to do your research because not every brand is honest about the stones they are using. Sometimes it can be artificial, so it is better to do your research to find the authentic one. मैंने ये जेड रोलर एंड गुआ शा Amazon से लिया था। ना Amazon पे अगेन बहुत सारे जेड रोलर्स एंड गुआ शास अवेलेबल हैं, सो आपको अगेन अपना रिसर्च करना पड़ेगा। यू हैव टू गो थ्रू ऑल द पब्लिक रिव्यूज, जो प्रोडक्ट के रिव्यूज होते हैं वो सब पढ़ के एंड तब लेना। सो मैंने अपना रिसर्च किया था एंड आई फाइनली पिक्ड दीज टू एंड टू माई सरप्राइज मुझे ये प्रोडक्ट्स एकदम ऑथेंटिक मिले हैं। सबसे पहले तो इन प्रोडक्ट्स की आप फिनिशिंग देख सकते हो, बिल्कुल अच्छी वाली फिनिशिंग है, स्मूथ फिनिशिंग है। जब भी कोई आप डुप्लीकेट प्रोडक्ट लेते हो सकता है स्टोन में क्रैक्स हों या फिर स्टोन इवन ना हो, स्मूथ ना हो, जो कि आपके फेस पे स्मूथ ना लगे, बट दीज आर परफेक्टली मेड, दे आर वेरी स्मूथ, वेरी फाइन फिनिशिंग के साथ आता है। एंड एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिससे आप चेक कर सकते हो कि आपने जिन स्टोन्स में इन्वेस्ट किया है वो ऑथेंटिक है या नहीं है, वो ये कि आप अपने फेस पे जब इन स्टोन्स को रखोगे ना, दे विल फील कोल्ड। अगर कोल्ड फील हो रहा है तो ये ऑथेंटिक है, अदरवाइज ये डुप्लीकेट है। सो ये दोनों तो कोल्ड फील हो रहा है, सो यस आई एम हैप्पी विद माई परचेज। एंड डोंट वरी, इन दोनों के लिंक्स ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, सो डेफिनेटली चेक दैट आउट। नाउ अवॉइड यूजिंग जेड रोलर्स और गुआ शा इफ यू हैव गॉट एक्ने, ब्रोकन स्किन, बोटॉक्स और फिलर्स ऑन योर फेस because it can cause more damage to your skin and face. Alright guys, so this is it. Now I really hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ सीखा हो। So अगर वीडियो पसंद आया है then do let me know in the comment section below. वीडियो को लाइक दे देना एंड चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना सो दैट आने वाले सभी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन ना आपको सबसे पहले मिल सके। नाउ विद दिस इज शैलजा सिंह साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू गाइस super soon in my next. Until then, bye bye. Even when I ran away, you're all that I could see. You're